ओम ज्ञानम तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपेकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रोजेक्ट स्क्रीन विजिबल है? हाँ दिख रहा है। ओके ओके एक सेकंड। यस प्रभु जी, यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके। हरे कृष्णा। Krishna consciousness, Hindu cult or divine culture. Indians both inside and outside of India think that we are preaching the Hindu religion, but actually we are not. People should not think that we are preaching a sectarian religion. No, we are simply preaching how to love God. We are giving a spiritual culture that can solve all the problems of life, and therefore it is being accepted all over the world. Okay. Kanak? Hare Krishna. There is a misconception that the Krishna consciousness movement represents the Hindu religion. In fact, however, Krishna consciousness is in no way a faith or religion that seeks to defeat other faiths or religions. Rather, it is an essential cultural movement for the entire human society and does not consider any particular sectarian faith. This cultural movement is specially meant to educate people how they can love God. Sometimes Indians, both inside and outside of India, think that we are preaching the Hindu religion, but actually we are not. One will not find the word Hindu in the Bhagavad Gita. Indeed, there is no such word as Hindu in the entire Vedic literature. This word has been introduced by the Muslims from the provinces next to India, such as Afghanistan, Baluchistan, and Persia. There is a river called Sindhu bordering the northwestern provinces of India, and since the Muslim there could not pronounce Sindhu properly, they instead called the river Hindu. And the inhabitants of this tract of the land they called Hindus. In India, according to the Vedic language, the Europeans are called Malichas or the Yavanas. Similarly, Hindu is a name given by the Muslim. Yes, Prabhuji. India's actual culture is described in the Bhagavad Gita, where it is stated that according to the different qualities or modes of nature, there are different kinds of men who are generally classified into 4 social orders and 4 spiritual orders. This system of social and spiritual division is known as Varnashram Dharma. This system of social and spiritual division is known as Varnashram Dharma. The 4 Varnas or social orders are Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. The 4 ashrams or spiritual orders are Brahmacharya, Grahastha, Vanaprastha, and Sannyas. The Varnashram system is described in the Vedic scriptures known as the Puranas. The goal of this institution of Vedic culture
is to educate every man for advancement in knowledge of Krishna, not God. That is the entire Vedic program. तो ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो इस कथावाचकों से डिफरेंट है, करेक्ट ना? Yes, Prabhuji. क्योंकि हम लोग भगवान की नॉलेज जनता को देते हैं। बाकी बाहर के संसार में क्या होता है, वो सिर्फ भगवान की लीलाएं सुनाते हैं और छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बताते भगवान ऐसा क्यों किए, क्या किए, भगवान ने क्या रूप रंग है, कैसे है, क्या है, कुछ भी नहीं, बस उधर से लीला सुना के एंटरटेनमेंट करके छोड़ देते हैं। तो ये मूवी की तरह दे देते, कुछ चीज दे के एंटरटेन किया और छोड़ दिया। Yes, Prabhuji. When Lord Chaitanya talked with the great devotee Ramanand Raya, the Lord asked him what is the basic principle of human life. Ramanand Raya answered that human civilization begins when one ashram dharma is accepted. Before coming to the standard of one ashram dharma, there is no question of human civilization. Therefore, the Krishna consciousness movement is trying to establish this right system of human civilization, which is known as Krishna consciousness or the Varna Ashram divine culture. Yes, Bhaji. Yes, Prabhuji. ये समझ नहीं आया प्रभुजी, एक बार थोड़ा सा व्हाट इज द बेसिक रमन, ये समझ नहीं आया व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लाइफ रामानंद व्हेन वर्णाश्रम धर्म इज एक्सेप्टेड, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का एक डिस्कशन है, उस पर प्रभुपाद ने बुक भी लिखा है। तो उसमें स्टार्टिंग के आंसर्स में रामानंद राय बता रहे हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है दैट बिगिंस विद वर्णाश्रम सिस्टम, और जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ यही राइट वे है रहने का, तो वही एक तरह से बेसिक वर्णाश्रम सिस्टम में तो आप समझ ही गए होंगे। तो समझ गया, अच्छा है ना। फिर उसके बाद अगर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है तो उसे कैसी ह्यूमन सिविलाइजेशन बोलेंगे? फिर तो वो मतलब एनीवन सिविलाइजेशन ही मानो आप उसे, क्योंकि सब अपनी अपनी मर्जी से जिसको जो मना रहा है वो कर रहा है। शूद्र है तो वो पता चला ब्राह्मण का काम करने लगा, जो ब्राह्मण है वो शूद्र का तरह बिहेव कर रहा है, तो इसे हम ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या बोलेंगे? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दिस राइट सिस्टम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, दैव वर्णाश्रम डिवाइन कल्चर। तो एक्चुअली एक तो वर्ण सिस्टम होता है जो सिस्टम को मतलब ऑर्डर में रखने के लिए होता है संसार को। यहाँ पर बात दूसरा से वर्ड लेके आ रहे हैं जो है दैव वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम मतलब ये ट्रांसेंडेंटल वर्णाश्रम सिस्टम है जिसमें हम लोगों को मतलब ब्राह्मण दीक्षित करते हैं, फर्स्ट इनिशिएट करते हैं और वो भगवान की भक्ति में उनको लगाते हैं। तो इवन दो ही मे बी वर्किंग फॉर समवन एल्स व्हिच मींस ही माइट बी वर्किंग एज अ शूद्रा, but he is more than the Brahman. Why? Because he becomes Vaishnava. Yes, इस तरह से डिवाइन कल्चर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। Oh, nice. Thank you, Guruji. Okay. मतलब करेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को लगता है तो, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग। नवीन प्रभु भी ज्वाइन किए हैं। Yes, Guruji. We can request him to read now. Yes, Guruji. Sure, Rudy. In India, the Varnashrama system has now been taken in a perverted way, and thus a man born in the family of a Brahmana, the higher social order, claims that he should be accepted as a Brahmana. But this claim is not accepted by the Shastra. One's forefather may have been a Brahmana according to Gotra or the family hereditary order, but real Varnashrama Dharma is based on the factual quality one has attained, regardless of birth or heredity. Therefore, we are not preaching the present day system of the Hindus, especially those who are under the influence of Shankaracharya. For Shankaracharya taught that the absolute truth is impersonal, and thus he indirectly denied the existence of God. Shankaracharya's mission was special. He appeared to reestablish the Vedic influence after the influence of Buddhism. Because Buddhism was patronized by Emperor Ashoka 2600 years ago, the Buddhist religion practically pervaded all of India. According to the Vedic literature, Buddha was an incarnation of Krishna who had a special power and who appeared for a special purpose. His system of thought or faith was accepted widely, but Buddha rejected the authority of Vedas. While Buddhism was spreading, the Vedic culture was
adopted both in India and other places. Therefore, since Shankaracharya's only aim was to drive away Buddha's system of philosophy, he introduced a system called Mayavad. और चैतन्य महाप्रभु मायावाद सिस्टम में ही संन्यास लिए थे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है क्यों लिए थे। तो अभी कुछ दिन पहले बल्कि नवीन प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे क्यों लिए थे। तो उसके बाद मैं देखा तो रोमपद स्वामी महाराज का है एक आर्टिकल, उसमें इसके कुछ रीजंस बताए गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु मायावाद संप्रदाय में संन्यास लिया, उसका एक रीजन तो ये बताया गया है कि उस समय लोग मायावाद सिस्टम में जो संन्यास लेता था उसी को सन्यासी मानते थे, और सन्यास लेना महाप्रभु को उस समय के हिसाब से जरूरत लगा, क्योंकि लोग सन्यासी की ही सुनते थे। तो महाप्रभु को लगा कि अगर कृष्णा कॉन्शियस देना है तो सन्यासी बनना पड़ेगा, और क्योंकि लोग मायावाद सन्यासी को ही सन्यासी मानते हैं, तो फिर इसलिए ये भी एक रीजन था कि उन्होंने मायावाद सिस्टम में सन्यास लिया। दूसरा उसका रीजन बताते हैं कि मायावादी जो है वो बहुत अपराध करते हैं भगवान के प्रति। तो वो चैतन्य महाप्रभु का प्लान था कि ये सब जब मैं मायावादी सन्यासी बन जाऊंगा तो ये सब लोग जो है मेरे को आकर प्रणाम करेंगे, और उस समय मैंने अपने चरण धूलि देके इनका उद्धार करूंगा। और महाप्रभु किए भी, जैसे जो प्रीस्ट था जगन्नाथपुरी में सांबो भट्टाचार्य, उनका भी वो मायावादी थे, उनका उद्धार किया। इस तरह से काफी उनका उद्धार किए। और थर्ड रीजन उसमें बताते हैं कि जो केशव भारती थे वो जो प्रभुपाद अभी बोले भी हैं शंकराचार्य परंपरा में आते थे। तो शंकराचार्य एक्चुअली उस समय के समाज के हिसाब से मायावाद बोले थे, जबकि शंकराचार्य को पता था कि जो भगवान श्री कृष्ण है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो सेम गोज विद केशव भारती आल्सो। एंड सो internally Chaitanya Mahaprabhu knew that he knows the truth, but externally to have people in some order he is propagating Mayavad. So ये तीन रीजन रूप गोस्वामी महाराज उसमें बता रहे हैं। ठीक है ना, कई बार ये रीजन आ जाता है दिमाग में क्वेश्चन, तो मैंने सोचा डिस्कस करता हूँ। तो okay, strictly speaking, Mayavad philosophy is atheism, for it is a process in which one imagines that there is God. This Mayavad system of philosophy has been existing since time immemorial. The present Indian system of religion or culture is based on the Mayavad philosophy of Shankaracharya, which is a compromise with Buddhist philosophy. According to Mayavad philosophy, there actually is no God, or if God exists, he is impersonal and all-pervading, and can therefore be imagined in any form. This conclusion is not in accord with the Vedic literature. क्रिश्चियनिटी में भी इस तरह का वो एक इम्पर्सनल का फंडा मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जो है ना जीसस का फॉर्म में आ गए थे, वैसे तो जीसस इम्पर्सनल है, तो वैसे क्रिश्चियनिटी में भी डिवीजन हो रखे हैं। Okay, so this conclusion is not in accordance with the Vedic literature. That literature names many demigods who are worshipped for different purposes, but in every case, the Supreme Lord, the personality of Godhead Vishnu, is accepted as a supreme controller. That is real Vedic culture. The philosophy of Krishna consciousness does not deny the existence of God and the demigods, but Mayavad philosophy denies both. It maintains that neither the demigods nor God exist. For the Mayavadis, ultimately all is zero. They say that one may imagine any authority, whether Vishnu, Durga, Lord Shiva, or the sun god, because these are the demigods generally worshipped in society. But the Mayavad philosophy does not, in fact, accept the existence of any of them. The Mayavadi says that because one cannot concentrate one's mind on the impersonal Brahman, one may imagine any of these forms. This is a new system called Panchopasana. It was introduced by Shankaracharya, but the Bhagavad Gita does not teach any such doctrines, and therefore they are not authoritative. Yes, Naveen Prabhuji. The Bhagavad Gita accepts the existence of the demigods. The demigods are described in the Vedas, and one cannot deny their existence, but they are not to be understood or worshipped according to the way of Shankaracharya. The worship of demigods is rejected in the Bhagavad Gita. The Gita 7.20 clearly states, Kama ishtaiste rihita jnana prapadyante nyaya de. Sorry, Prabhuji, मैं मीटर ही गलत है. Kama ishtaiste rihita. छोड़िए.
कामेस्तेस्तिर्हितज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यादेवता तं तं नियमम् अस्तेय प्रकृत्यै नियता स्वया. Those whose minds are distorted by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. Furthermore, in the Bhagavad Gita 244, Lord Krishna states, Yes, Prabhuji. भोगैश्वर्या प्रशक्तानां ताया पर्था चेतसां व्यवसायत्मका बुद्धिः समाधौ न विद्यते. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service does not take place. ये बहुत अच्छा है. देखिए, in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service does not take place. Those who are pursuing the various demigods have been described as Hitagyanaha, which means those who have lost their sense. That is also further explained in Bhagavad Gita 7:23. Antavatu phalam tesham tadbhavati alpamedasham devan deva yajo yanti madbhakta yanti mamapi. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of demigods, but my devotees reach my supreme abode. The rewards given by the demigods are temporary because any material facility must act in connection with the temporary body. Whatever material facilities one gets, whether by modern scientific methods or by deriving benedictions from the demigods, will be finished within the body, with the body. But the spiritual advancement will never be finished. Sorry, Broji, for all the background noise. No, no, Prabhuji. वो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है प्रभु जी, वो एंटरटेनिंग हो रहा है Hare Krishna. थोड़ा. इसमें जो पहले वाला श्लोक है ना, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहुंचे व्यवसायत्मक बुद्धि समाधना विधि, तो उसपे राधेश्याम प्रभु का एक लेक्चर भी सुना था मैं जब पुणे में था, तो उसमें वो बताते हैं, मतलब उसमें ये था कि हम भक्ति क्यों नहीं करते, ऐसा कुछ टाइटल उन्होंने दिया था, मतलब सिमिलर टाइटल था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि हमारी भक्ति क्यों नहीं हो रही है. तब वो बता रहे थे कि we should check if we are making material plans and if we are making spiritual plans, because if we are making material plans and we are chasing them, then it means we will compromise our sadhana. And if we are making spiritual plans and we are chasing them, which means we will not compromise our sadhana, then we will become samadho na vidyate, जो है हमारा वो ओवरकम हो जाएगा, then we will become samadho vidyate. तो इस उससे मतलब हम देख सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं. That was the check point कि कैसे करना है. करेक्ट है ना? 9 टू ठीक बोलो ना. Yes, yes, Broji, बिल्कुल बिल्कुल. मैंने म्यूट कर लेता हूँ, थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा है ना इसलिए. हाँ, चलेगा. उधर तो मेरा टर्न है क्या? आपका टर्न है. Yes, Prabhuji. Yeah, please go. People should not think that we are preaching a sectarian religion. No, we are simply preaching how to love God. There are many theories about the existence of God. The atheist, for example, will never believe in God. Atheists like Professor Jacques Monod, who won the Nobel Prize, declared that everything is a chance. A theory already put forward long ago by atheist philosophers of India, such as Charvaka. Then other philosophies, such as the Karma Mimamsa philosophy, accept that if one goes on, Sorry, Guruji, please. Okay. That if one goes on doing his work nicely and honestly, automatically the result will come, and without need for one to refer to God. For evidence, the proponents of such theories cite arguments that if one is diseased with an infection and take medicine to counteract it, the disease will be neutralized. But our argument in this connection is that if one gives a man the best medicine, he still may die. The results are not always predictable. Therefore, there is a higher authority, Devanetrena, a supreme director. Otherwise, how is that the son of a rich and pious man becomes a hippie in the street, or that a man who works very hard and becomes rich
is told by his doctor, "Now you may not eat any food, but only barley water." Yes, Guruji. The Karma theory holds that the world is going on without the supreme direction of God. Such philosophies say that everything takes place by lust. Kaam hai to kaam. By lust, a man becomes attracted to a woman, and by chance, there is sex, and the woman becomes pregnant. There is actually no plan to make the woman pregnant, but by a natural sequence, when a man and woman unite, a result is produced. Um, the atheistic theory, which is described in the 16th chapter of the Bhagavad Gita as asuric or demonic, is that actually everything is going on in this way because of chance and resulting from natural attraction. This demonic theory supports the idea that if wants to avoid um, children, he may use a contraceptive method. ये demonic theory बताइए. Yes, Guruji. आगे बढ़िए. Kanak. Actually, however, there is a great plan for everything, the Vedic plan. The Vedic literature gives directions regarding how men and women should unite, how they should beget children, and what the pure purpose of sex life is. Krishna says in Bhagavad Gita that sex life sanctioned by the Vedic order, a sex life under the direction of Vedic rules and regulations, is bona fide and is acceptable to him. But chance sex life is not acceptable. If by chance one is sexually attracted and there are children, they are called one Shankara, unwanted population. That is the way of the lower animal. It is not acceptable for humans. For humans, there is plan. We cannot accept the theory that there is no plan for human life or that everything is born of chance and material necessity. चांस वाली थ्योरी कितनी मतलब पागलपने की थ्योरी है तो पता नहीं कभी समझ में आ जाता है. एक बार मेरा फ्रेंड भी था, वो भी बोल रहा था कभी आईबीएम में था, तो भाई चांस हो रहा है सब कुछ. चांस मतलब कभी तो होगा ना, ऐसे शेड्यूल से कैसे हो सकता है कि और मतलब जैसे डेली सूरज निकलता है टाइम से, है ना, सब चीज टाइम इतनी से परफेक्ट. सब चीजें. चांस वाली थ्योरी मतलब ये लोग कैसे बिलीव कर लेते हैं, कभी सरप्राइज. चलो बाकी थ्योरी हो गया, जैसे हो गया बुद्ध की थ्योरी आ गई, या ये मायावाद भी चलो पता नहीं कैसे, बट सपोज करो, क्योंकि वो भी शास्त्रिक कमेंट देके बोल देते हैं मायावाद, तो चलो वो फिर भी. बट ये चांस वाली थ्योरी को तो पता नहीं लोग कैसे ही बिलीव कर लेते हैं, मतलब काफी सरप्राइज होता है मुझे. गुरुजी इजी हो जाता है ना कुछ भी करना, मतलब रेस्ट्रिक्शंस हट जाती है ना सारी. हाँ वो भी है, फिर किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, बोले बस हाँ बाई चांस ये हो गया, बाई हाँ चांस हाँ, हो गया, फ्री हो जाते हैं. मतलब फिर वो सेंस बट फिर भी मतलब ग्रेटिफिकेशन. इतना लॉजिकल जैसे रहते हैं आसपास हम लोगों के, कंप्यूटर पे काम करने वाले स्पेशली, वो भी ऐसे इलॉजिक मतलब इलॉजिकल आर्गुमेंट्स देते हैं कि सब बाई चांस हो रहा है, बाई चांस हो रहा है. कैसे हो सकता है बाई चांस. ये हो जाता है ब्रो जी उन लोगों को ना, मतलब क्या रहता है कि वो ना अगर कोई उन्हें बताएगा भी ना, वो तब भी समझना नहीं चाहते. रीजन बीइंग क्या है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना एंजॉयमेंट फैक्टर जो है वो ज्यादा मिल रहा है उन्हें, कि दे आर अर्निंग गुड, तो उन्हें लगता है कि लेट्स एंजॉय. और अगर ये सब चीजों में वो घुसेंगे ना, तो फिर उन्हें लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब वो सब चीजों पे इम्पेक्ट आएगा उनका एंजॉयमेंट. मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रो जी इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं. जैसे मायावाद है ये या हो जो भी सकता थ्योरी है, पे सही जाते बात है, हैं कि भाई हम जानना ही नहीं सही बात चाहते, है. कान बंद कर लो. भक्तों में भी तो देखा जाता है ना, अगर एक तरह से देखा जाए तो, मतलब हम लोगों को भी सब रियलिटी पता है, बट व्हेन इट कम्स टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो कई बार हम उसे भी कृष्णा के सपोर्ट में बोल देते हैं कि नहीं हम करना चाहते हैं, तो रियलिटी हमें भी सब पता है, बट वहां पे हम भी कृष्णा का मतलब हम बड़ा फ्लैग लेके चलते हैं, कृष्णा के फ्लैग लेके चलते हैं आगे. यस, आपका पॉइंट ठीक हो सकता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का इतना ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं फिर बिल्कुल भी, फिर कहते हैं नहीं चांस वाली थ्योरी ठीक है ना. यस ब्रो जी, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में मतलब एक्सेप्टेंस तो है, वो धीरे धीरे तो जाएगा ब्रो जी. बट कुछ लोग हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो थोड़ा थोड़ा भी नहीं मतलब करना चाहते. जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेरा टर्न. अभी किसने पढ़ा था ब्रो जी, आपने पढ़ा था? नवीन प्रभु जी का टर्न है. ब्रो जी. ओके, अच्छा गुरुजी एक सेकंड ना, मैं चांस पर सोच रहा हूँ. यहाँ पे चांस दे आर रेफरिंग टू द रैंडमनेस.
yes. हाँ रैंडमनेस को। अच्छा, तो जो इसकी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है वो रैंडम वाली थ्योरी है क्या? मेरे को ऐसा नहीं लगता। वो रैंडम थ्योरी क्या है? वो तो ये बोलते हैं ना ओवर द टाइम, पहले वो था क्या बोलते हैं, सिंगल सेल था, फिर सिंगल सेल से मल्टी सेल हुए, फिर ऐसे ऐसे इवॉल्व हुआ। तो उसमें रैंडमनेस कहाँ है उसमें? डार्विन का नाम नहीं आया इसमें। अच्छा अच्छा, पर तो ये डार्विन को नहीं बोल दूसरी रहे। थ्योरी है क्या? हाँ हाँ चांस थ्योरी है ना प्रभु जी। अच्छा चांस अच्छा थ्योरी अच्छा काफी लोग प्रोपोगेट करते हैं। चांस थ्योरी यूट्यूब पे भी काफी वीडियो। अच्छा, ओके ओके, मुझे नहीं पता। वो लोग कहते कभी हैं कि मुझे सब ऐसा बाई लगा चांस चांस। तो क्या है, वो तो प्रोबेबिलिटी है, या आप जी गिरोगे नहीं गिरोगे। जी जी हाँ जी प्रभु जी। हाँ, अच्छा अच्छा। अब वो आप चांस पे, व्हेन यू से चांस, आई एम ट्राइंग टू थिंक, बेसिकली आप बोल देते हो अच्छा वो लक, भाग्य और चांस अब एक ही चीज है कह सकते हैं? नहीं, लक में तो वो कर्म मीमांसा वाले आ गए। वो कर्म मीमांसा अच्छा फिलोसफी वाले बोलते हैं कि ठीक है कर्म था जी, ये हो गया वो हो गया। बट उसको भी अच्छा कैसे आप एग्जैक्टली बोलोगे? जैसे मतलब किसी का मेरे हाथों मरना, ये उसका कर्म था कि मैंने अपनी फ्री विल से उसे मार के पाप इकट्ठा कर लिया। ये कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कर्म अच्छा, मीमांसा में भी पूरा जस्टिफाई नहीं कर। ठीक है छोड़िए, खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जैसा आपने बोला कि हाँ, हर चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते चांस पे। जी भाई। Shankaracharya theory that there is no God and that one can go with his work and imagine God in any form just to keep peace and tranquility in society is also more or less based on the idea of chance and necessity. Chance का context इतना clear नहीं हो पा रहा है, but ठीक है. Our way, however, which is completely different, is based on authority. It is this divine varnashram dharma that Krishna recommends, not the caste system as it is understood today. This modern caste system is now condemned in India also, and it should be condemned, for the classification of different types of men according to birth is not the Vedic or divine caste system. अभी भी एक तरह से देखें तो कास्ट सिस्टम ही तो चल रहा है। हम शूद्र हैं और बच्चों को भी शूद्र ही बना रहे हैं। है ना? बट हाँ फिर भी Yes. इस्कॉन में ये है कि दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, पुजारी वगैरह बन सकता है, तो वो भी अच्छा है। ओके उदित आपका टर्न है ना? सूजी 8:30 हो गए तो ओ 8:30 हो गया। ओके ठीक है yes, सूजी। ओके आई स्टॉप हियर। कोई डिस्कशन करते रहते तो टाइम का पता ही नहीं चलता और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है नहीं? सूजी वो एक वीडियो बनाया था वो विल स्मिथ वाला, अगर अभी 3.5 मिनट। आप ग्रुप पे भेजिए ना एक बार ताकि सब लोग देख लेंगे। यू वांट टू शो नाउ? वो फिर YouTube पे अभी डाल के भेज दो। YouTube पे डाल के भेज क्योंकि वो सकते हैं। बड़ा है ना, वो 500-600 MB का है, तो फिर ग्रुप पे तो आ नहीं पाएगा। नहीं YouTube पे डाल के आप लिंक भेज दीजिए ना ठीक है बस भाई, ये टाइम वाले ग्रुप पे। ओके तो सभी लोग बाकी सबसे भी शेयर कर लेंगे अपने Yes, व्हाट्सएप वगैरह sir. ग्रुप पे। Yes. इधर तो कम्युनिटी में मैं यस लोगों को बोल दूंगा। यस ओके भाई, ठीक है। ओके